Hello students, today we will talk about the regulation of respiration. That means how the rate of respiration is regulated in our body, and respiration is regulated by neural system. मतलब respiration को regulate करने का job किसे मिला है? हमारे न्यूरल सिस्टम को. अब रेगुलेट क्यों करना है रेस्पिरेशन को? टू सूट द डिमांड ऑफ टिश्यू. What it means, whenever there is very high concentration of CO2 inside the tissue and tissue requires more oxygen, in that case this neural system will regulate the rate of respiration. Fine. Now how neural system will regulate the respiration? There are three mechanisms or three things. Like first one is the respiratory rhythm center, which is present in medulla oblongata, pneumotaxic center, which is present in pons varuli, and chemosensitive area, which is present just adjacent to the medulla. Fine. Now this respiratory rhythm center is the main center, means it primarily control the rate of respiration. How? This chemosensitive area, as the name indicates, sensitive. This area is sensitive to CO2 and hydrogen ions. So whenever there is high concentration of CO2 and H ions in the tissue, this area will get the signal, and then this area will send the signal to the respiratory rhythm center in the medulla oblongata. Fine. Then this medulla oblongata will regulate the respiration rate. Fine. And what about the pneumotaxic center? This pneumotaxic center, which is present in pons, can moderate the functions of medulla. Sometimes the activity of medulla gets very high. So in that case, this region will moderate or change or alter the functions of medulla. Fine. So सबसे पहले क्या होगा आपका कीमोसेंसिटिव एरिया, जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा. ओके. और ये सिग्नल को भेज देगा मेड्यूला के पास. ठीक है. फिर मेड्यूला अपनी रेस्पिरेशन की जो रेट है उसे रेगुलेट करेगा एज पर द डिमांड ऑफ टिश्यू. देन समटाइम्स इट हैपन्स कि एक्टिविटी मेड्यूला की बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. उस केस में पोन्स जो होगा, न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन पोन्स, वो मॉडरेट करेगा मेड्यूला ओब्लोंगेटा के फंक्शंस को. सो दीज थ्री थिंग्स ऑफ न्यूरल सिस्टम विल रेगुलेट द respiration rate. The first one is the respiratory rhythm center, which is the main center. Second one is the chemosensitive area, which is present just adjacent to medulla. And third one is the pneumotaxic center present in pons. Fine. ये तीनों सिस्टम तो हैं ही, इसके साथ साथ कुछ आर्टरीज भी हैं, जैसे कि आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी. ये दोनों भी सेंसिटिव हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन. मीन्स व्हेनेवर देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 and hydrogen ions inside the tissue, these arteries will get activated or they will get the signal, and then the signal will be sent to the obviously rhythm center present in the medulla, and then action will be taken. That means aortic arc, carotid artery and chemosensitive area. These three are sensitive to CO2 and hydrogen ion and can detect their excessive presence. Fine. And will send the signal to medulla. Fine. And the role of oxygen is quite insignificant.
क्योंकि रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करने में ऑक्सीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फाइन, या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की बात एक्चुअली की ही नहीं है, बहुत ही कम की थी, वो भी आपको ये बताने के लिए कि रेगुलेशन जो है रेस्पिरेशन की वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर टिश्यू में CO2 की कंसनट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और उसे ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाएगा बाय these 3 and these arteries. Fine. So role of O2 is quite insignificant in this process. It was all about the regulation of respiration.